हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, सो रिलेशन बिटवीन actually it is not between, it is among, relation among, because more than two is among, relation among alpha beta and gamma। क्लियर है। सो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखें, इसको पॉइंट वाइज कवर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करता हूं, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा इन AC, अल्फा DC, DC AC। ठीक है, ऐसे ही अगर गामा की बात करें AC में और DC में। अगर मैं AC में बात करूं, सो अल्फा इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करंट गेन। क्लियर है। सो अल्फा हियर इट इज delta IC upon delta IE, but in case of DC alpha is what? IC upon IE, so it is for alpha either in AC case or in DC case। Similarly अगर मैं बीटा की बात करूं, so it is common emitter current gain, common emitter current gain in AC the beta is delta IC upon delta beta, delta IB, sorry, delta IB, but in case of DC beta is what? simple IC upon IB। सही है यहाँ तक। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं गामा के लिए, तो गामा इन AC is what? delta, it is in common collector, so it is common collector IE upon delta IB, and in case of DC it is simple gamma equals to IE upon IB। क्लियर है यहाँ तक। सो ये तो रहा रिलेशन बिटवीन AC एंड DC, जस्ट चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन इमीटर करंट, चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट, चेंज इन इमीटर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट इन AC, एंड इन DC इट इज जस्ट रेशियो ऑफ कलेक्टर टू इमीटर, कलेक्टर टू बेस, इमीटर टू बेस। ठीक है, ये तो पहले पॉइंट की बात। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं, सेकंड पॉइंट की रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन है अल्फा बीटा और गामा के लिए। ठीक है, नाउ सिंस IE इज इक्वल्स टू IC प्लस IB, नाउ आई जस्ट टेक IB कॉमन, IE अपॉन IB इक्वल्स टू IC अपॉन IB प्लस 1। नाउ IE अपॉन IB इज गामा and IC upon IB is what? beta, so gamma is equals to 1 plus beta, the first relation। ठीक है यहाँ तक। Now if you take same equation, IE equals to IC plus IB, now this time IC common करते हैं, IC upon 1 plus IB upon IC। अब जरा ध्यान से देखिएगा, IC upon IE, IC upon IE is alpha, so IE upon IC is 1 by alpha, so it is 1 by alpha 1। IC upon IB is beta, so IB upon IC is 1 by beta, 1 by beta। क्लियर है यहां तक। सो 1 by alpha equals to 1 plus beta, so alpha equals to beta 1 plus beta। क्लियर है यहां तक। नाउ you cross multiply all these things, then it is alpha plus alpha beta equals to beta, and alpha plus alpha beta minus beta equals to 0, then alpha plus beta common, alpha minus 1 equals to 0। ठीक है यहाँ तक। Now from there alpha equals to minus beta alpha minus 1। ठीक है यहाँ तक, पक्का है। So beta equals to minus alpha, alpha minus 1, or alpha 1 minus alpha, so we have alpha beta relation। Now put this value beta here, this value of beta here, so gamma is 1 plus beta, 1 plus beta is what? Alpha 1 minus alpha, so gamma is 1 minus alpha plus alpha upon 1 minus alpha, so gamma is 1 upon 1 minus alpha। So we have all the relation between alpha, beta and gamma for the competitive exam। This relation and these relations are very important। Clear? I hope so
जो सेकंड पॉइंट है वहां तक समझ में आ गया होगा आपको कि अल्फा एसी और डीसी के केस में क्या है और अल्फा बीटा में जो रिलेशन है वो क्या है। क्लियर है यहां तक, बात समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, थर्ड पॉइंट यहीं पर मैं कवर कर रहा हूं नाउ। अल्फा इज कॉमन बेस करंट गेन, बीटा इज कॉमन इमीटर करंट गेन, and gamma is common collector gain, current gain. Okay, so if you arrange these in increasing order, so this is the lowest current gain, lowest current gain, and it is the highest current gain, highest current gain. That means you cannot make common base configuration as current amplifier, but you can have common collector as current amplifier as best choice. So it is an increasing order of alpha, it is increasing order of current gain or alpha beta gamma. क्लियर है यहां तक। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की यहां पर बात करता हूं, फोर्थ पॉइंट की ना, अल्फा की जो रेंज है, अल्फा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 फॉर इन if the base recombination is 0 and then base current is 0, then it is equal to 1, otherwise it is always less than 1. Beta is greater than 1 and gamma is always greater than, very greater than 1. क्लियर है। अल्फा की जो रेंज है बेटा वो है 0.95 to 0.98, बीटा की रेंज जो है 52 200 एंड 51 टू, अगर मैं 1 को ऐड कर देता हूं देन 51 to 201, इट इज रेंज ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड वैल्यूज। क्लियर है। तो अल्फा बीटा में रिलेशन समझ में आ गया। कौन सबसे अच्छा करंट एम्पलीफायर है वो भी क्लियर हो गया कि कॉमन बेस जो है अच्छा करंट एम्पलीफायर नहीं है, कॉमन जो कलेक्टर है वो सबसे अच्छा एम्पलीफायर है एज ए करंट गेन के हिसाब से। ठीक है, यहां तक एक दो पॉइंट और रह गए हैं, उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्लियर है। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पॉइंट हो गए। फिफ्थ पॉइंट को लेते हैं कि कैसे बीटा जो है चेंज होता है, या बीटा सैचुरेशन और एक्टिव रेंज में क्या रिलेशन है, और बीटा पर जो अर्ली इफेक्ट है, अल्फा बीटा पर जो अर्ली इफेक्ट का क्या इफेक्ट होता है। तो 3-4 पॉइंट और रह गए, उसको भी कवर कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट समझते हैं बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंसी। टेम्परेचर डिपेंडेंसी नाउ अगर टेम्परेचर के हिसाब से देखें, आपका जो अल्फा बीटा या जो गामा है टेम्परेचर के साथ, एक मिनट, जो अल्फा बीटा है एंड ICO, दीज आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। नाउ एज temperature increases, alpha beta gamma increases, and ICO there's a reverse leakage current, ICO doubles for every 10 degree centigrade rise in temperature। ठीक है, तो इसका एक ग्राफ समझते हैं। now it is in some books it is also called HFE, the beta, and I just take IC in microampere। ठीक है, so it is suppose 100, then it is 200, then it is 300। so for a particular temperature minus 55 degree centigrade, this is the value of beta। then for 25 degree centigrade, this is the value। then for higher temperature, suppose the temperature is 125 degree centigrade, then the value of this। so that means as temperature increases, alpha beta gamma increases, ICO doubles for every 10 degree rise in temperature। क्लियर है, ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट समझाता हूं मैं आपको। नाउ बीटा फोर्स्ड, that is called IC upon IB at saturation is always less than beta active। that means the value of beta is always less than the beta active। Why I am giving the beta? because beta is the common emitter configuration current gain, and common emitter configuration is most widely used। so beta जो forced है, that is forced beta, that is beta in saturation is always less than the beta active। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट में देखते हैं। सपोज एक NPN ट्रांजिस्टर है मेरे पास, ये रहा एक NPN। now this is collector and this is emitter। now this should be either NPN or PNP।
Now if you interchange the collector and emitter, if you interchange the collector and emitter, okay, so now this is collector, this is emitter, and this is base as NPN. Clear? Now first this junction was forward bias, and this junction is reverse bias. Clear है? Now this junction is reverse bias, forward bias, and this junction is reverse bias. मीनिंग क्या है? एक NPN या PNP ट्रांजिस्टर है, उसमें अगर मैं कलेक्टर और इमीटर को मैं चेंज करता हूं तब क्या फर्क पड़ता है? सो इफ अल्फा एफ comma beta f comma gamma f are the current gain in common emitter, common collector and common base. Now if the emitter and collector are changed, if emitter and collector are interchange, then the forward bias junction becomes reverse bias. Sorry, the forward emitter base junction, earlier it is forward bias, now it is reverse bias. Now the junction collector base, which was reverse bias, becomes forward bias. Clear? Then what happened? The current gains are alpha R, beta R, and gamma R. These are called reverse active mode. This is called reverse active mode. Then the correct relation between these three are this. That means the gain either in common base, common emitter, or common collector, the gain in the forward active mode is always very greater than the gain in reverse active mode. क्लियर है? ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी. ठीक है यहां तक? Now one more point. One more point is that early effect on alpha, beta, gamma. ठीक है? Now, so if you remember, as reverse biased voltage increases, that is BCV increases, then effective base width decreases, recombination decreases, so IB decreases, so IE increases, so alpha increases, beta increases, and gamma also increases. So that means जो base width modulation है, that increases the effect, reduces the effective base width, recombination reduces, base current reduces, emitter current increases, so alpha beta also increases. Clear है यहाँ तक? So this topic contains the relation between alpha, beta, gamma, range values, and the dependency of alpha, beta, gamma on early effect, temperature, and when you interchange the collector and emitter. Clear? Now one more thing extra. अब अगर आप यहाँ से देखें, जो emitter है हमारा, that is highly doped, and collector is lightly doped. Clear है? Moderately doped. And emitter junction and the collector junction areas or width are different. Now if you interchange, then we don't get the exact result. Clear है? एक NPN या PNP ट्रांजिस्टर में अगर आप कलेक्टर और इमीटर को इंटरचेंज करते हैं, then that is called reverse active mode, and you don't get exact electrical property. That's why BJT is called, the BJT is electrically asymmetrical device. But if you interchange these things, in MOSFET, that is electrically symmetrical device. क्लियर है? सो अल्फा बीटा जो गामा का रिलेशन है वो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं.